like since the past month I haven't been the best in here. Like I've considered therapy. I went on ki therapy इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है. It's a good thing. It's a very good thing. But इतनी इसको fetishize मत करो. Don't fetishize it on both the ends. Listen to this advice, and if you're a content creator, तुम 100 फॉलोअर्स से भी बहुत पैसे कमाना शुरू कर सकते हो. डजंट मैटर, तुम्हें नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉलो करो. Welcome to another episode of Sit with Sid. This is episode number 41, I guess, or 40. But damn, bro, we've got to 41 episodes or 40 episodes, whatever. But this is good. I mean, we've been out here consistently putting out content. You know, we've got the best guests, we've got the best stuff, we've got the best content, man. Matlab, I think it's the best podcast. Why haven't you subscribed yet? Subscribe करो. But अगर तुमने कर रखा है और तुम देख रहे हो भाई, I've been putting out content कब से, तो प्लीज़ इसको शेयर करो. हम आ गए आज एक नए सोलो एपिसोड के साथ. और सोलो एपिसोड ये इसलिए क्योंकि हमारे पास फ्रैंकली गेस्ट नहीं है आजकल. एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं लेज़ी हो गया हूँ. उसके काफ़ी रीज़न्स हैं जो कि मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ इसी पॉडकास्ट में, तो सुनते रहो. बट फॉर नाउ प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड. ये एपिसोड नहीं तो चलो बाकी जो एपिसोड जो तुम्हें पहले सुने हो उनको शेयर करो, क्योंकि यार ज़रूरी है, थोड़े हमें फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स चाहिए. दैट्स व्हाट यू डू. So today I want to talk to you about some things. पहले तो why haven't I been a lot more like in with the guests? Like I guess after Jay, I haven't spoken out. I haven't reached out. Like I have reached out to a couple, but I haven't scheduled a podcast with some or the other from the creator or the intellectual space. The music one that you saw, that was recorded back in June. So, I'll tell you why that is. And yeah, there are some more things that I want to talk about. I want to talk about, so if you're a content creator, you should listen to this. You should watch this, because there's some important stuff. There's some very important stuff that's going to be here for you. I'm going to tell you like something that most of you don't realize, which can not only help your content grow, but can also make you a lot of money without any numbers. Like 100 followers पे भी अगर तुम ये चीज़ कर लोगे तो तुम्हारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, मैं बताता हूँ. तो ये चीज़ ध्यान में रखो, इसको देखो. नाउ तो ओके, let's just start with why I haven't been active with the guests really. So I haven't gotten lazy. मैं कुछ ऐसा नहीं कि मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ. That's not what I do. I've been pretty caught up. There's a lot of things going on. As you guys know, I've been working with Jay, तो उसमें there have been मैं जय ज़्यादा बोलता हूँ ना, ऐसा मतलब अपने आप को फ्लेक्स करता हूँ, जय के साथ काम करता हूँ. बट let's put that aside. But yeah, उस पर there are a couple of things that I gotten involved with more right now, like नई चीज़ें I picked up, and that's where we are at also with the newsletter and stuff. So that's a thing. The second is that my college has been on me. I mean, I've been getting assignments and tests काफ़ी ज़्यादा, and I need to cope up with them. So those have never been really the problem, but still. Also man, I think और क्या कर रहा हूँ यार मैं. I mean, I'm trying to get my life more streamlined after Mentep like shut down, or you can say like went on a break. I didn't really know what to do with my time a lot. मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ अपने टाइम के साथ. And like since the past month I haven't been the best in here. Like I've considered therapy too. I mean, I might just get into it. पहले तो I don't understand why, like अभी मैंने बता दिया है, तो a lot of you are gonna come with, oh Siddhansh, are you okay, are you fine? I mean, I appreciate the concern, I really do, but yes, I'm fine, thank you if you were gonna ask, but I'm good. But but like थोड़ा समझो ना. See, I see the word considering therapy as a spectrum. Because if you look at it from a very, like इसको तुम एक compare करो ना जिम से. So people who are, let's just say, very unhealthy, people who are at the verge of, let's just say, any disease which could be fatal to their health, उनको जिम जाने की नीड होती है. लाइक उनके लिए इम्पेरेटिव होता है कि तुम जिम जाओ, बिकॉज दैट्स रियली नीडेड. मतलब वहाँ पे there's sort of an imperative that's going on, and वहाँ पे you have to be concerned कि भाई if you're not going to the gym, then that's a problem. ठीक है. But there are people who are just unfit. Like
right now I am a bit unfit, like I'm like मैं मोटा हूँ, मैं unfit हूँ, and then there are other people who are unfit as well. तो उनके लिए भी they also hit the gym, but it's not that you're like, oh तू जिम नहीं जा रहा, oh fuck क्या कर रहा है तू, या फिर तू जिम जा रहा है, oh fuck तू ठीक है ना, तू क्या होने तरह, तू ठीक तो है, बट तू ठीक तो दिखता है, क्यों तू जिम जा रहा है. No, it's all about keeping yourself healthy here, like in the body and in the mind. ठीक है. सो थेरेपी इज लाइक दैट टू. लाइक इफ यू आर फीलिंग लाइक, अब तो नहीं बेचता थेरेपी में, बट इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, नो it's not like, it's not a problem, it's not something that you should be very adamant on कि थेरेपी इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है. इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इतनी इसको फेटिशाइज मत करो. डोंट फेटिशाइज इट ऑन बोथ द एंड्स. ठीक है. तो इट्स लाइक दैट. तो या दैट्स वेयर आई हैव बीन थोड़ा ऐसे अपना माइंड सेटल करना चाह रहे हैं. अपन भी करेंगे थोड़ी देर में. द थिंग इज़ दैट इतनी सारी चीज़ें एक साथ है ना. तो अगर मैं लाइक इफ़ आई ले डाउन, तो यार यहाँ पे एक तो लाइक द काम कुछ है, पहले ही बताया. देयर इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग सिंस द पास्ट मंथ. एक तो एक कॉर्पोरेट वालों का इतना पेपर वर्क होता है भाई. मैं वो 8 ईमेल की जो थ्रेड है ना ब्रो, उसमें 4 तरह के पेपर हैं जो कि हर 2-2 दिन के गैप में भेजे गए हैं, विच इज जस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन टू गेट द वर्क स्टार्टेड, विच इज़ जस्ट दैट. और अगर मुझे काम करने पे आया, 2 दिन का काम नहीं है वो, बट इतना ज़्यादा सीन होता है भाई कॉर्पोरेट कल्चर में. स्टार्टअप कल्चर, क्रिएटर कल्चर में ऐसा नहीं होता. तुम आज आए, कल से काम शुरू किया, अगले 2 हफ्ते में सैलरी. That's how it works. I mean, maybe it's because corporate mein there's a lot of employees to take care of, and that's why they need all of this paperwork. But I still think that this could be handled. I mean, there are startups with smaller teams which are, which are generating a lot of revenue, right? So हो सकता है शायद maybe in the future थोड़ा startup culture और बढ़ेगा. But हाँ, एक वो है. Then there's also this kind of project that I'm keeping under wraps right now. You'll get to know soon if that floats. So uska bhi, that has taken a lot of my time as well. So yeah, that's it. I mean, I want to be more active. I have a couple of people who I know, like, who want to be on the podcast, but timing का issue हो जाता है. कभी वो busy, कभी मैं busy. So it's like that. आएंगे. If you have anyone that you want on here, तो प्लीज़ कमेंट से बता दो, मुझे डीएम कर दो. और सुनो, ऐसे लोग डालने जिनका काम एक्चुअली में इंटरेस्टिंग हो. लाइक देखना कि सिद्धांश वुड लाइक दिस और नॉट. I mean, I don't want your favorite creator on out here. It's like, I mean, I'm not judging your choices or anything, but there's a certain kind of stuff that I like. और मतलब I'm not saying that तुम्हें पता होना चाहिए, but थोड़ा एक बार उसको scrutinize कर लेना. And yeah, man, that's where I'm at. Next week bhi you will get an episode. I'll try and bring in a guest episode. थोड़ा पहुँचेंगे हम उधर, because I like doing these conversations with people, but I'm too full in the head right now. मतलब थोड़ा intellectual conversations, अब थोड़ा वो मुझे like पता नहीं अभी, like for the timing थोड़ा मैं drive away हो गया हूँ उस चीज़ से. But we'll get back. That's not an issue. But यही है यार. Now, what I want to really talk about, first of all, I'm recording this at like 12:15 in the night. So अगर मेरी आँखें, if my eyes look a little like क्या बैग लग रहे हैं मेरे आँखों के नीचे, मैं नींद में लग रहा हूँ, तो शायद मैं हूँ. अगर मैं if I yawn during this podcast, please forgive me. I do not intend to. I just do it like, I mean, I'm just sitting right here talking to you because I need to maintain my consistency. I need to, I mean, but there are things in my mind that I wanted to say. वो मैं बाद में भी कह सकता था, but नहीं, मुझे वो अभी कहनी थी. And because मैं एक दिन लेट निकाल रहा हूँ ये एपिसोड, if you notice, हमारा जनरल अपलोड शेड्यूल फ्राइडे को होता है, but this one will be coming out on Saturday. And yeah, I want to do that. I don't want to miss a week at any cost. Like I want to put out content, but I do have stuff to say. All right, first of all, I told you about the therapy thing. Right, don't be afraid of that. It's a spectrum. Please थोड़ा उसको एक अपना जजमेंट का लेंस हटा के उसको नॉर्मली देखो यार. इंसान बात ही करता है सामने वाले से. It's not much of a problem. उसको जिम से इक्वेट करके देखो, क्योंकि the thing is that the gym is a very obvious like analogy to it, right? Very obvious analogy. मैंने बेंच प्रेस किया या फिर मैंने एक वेंडिंग सेशन किया, bro. Both of them are healthy for me. So that and
like Mentep no longer, like Mentep is on a break, so I hope like you get therapy from somewhere else, but you get it like if you need it. I mean, I am also considering for me, maybe I'll get it, maybe not, but yeah, that's where it's at now. So for the content creators, I have some advice right now going on, but isko samajh lo, like listen to this advice, and if you're a content creator, तुम 100 फॉलोअर्स से भी बहुत पैसे कमाना शुरू कर सकते हो. डजंट मैटर, तुम्हें नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉलो करो. आई वॉन्ट यू गाइज टू बी लाइक maintain a standard of your content. Okay, now a lot of people have this notion, like, and this is also propagated, that you do not need a lot of things, like you don't need to have a good lighting, a good setup, or a good camera to start with content creation. And I agree, I completely agree, but at the same time I also think that if you can invest a little bit, ज़्यादा नहीं. देखो, तुम्हारे पास एक फ़ोन होता है जिसका कैमरा डिसेंट होता है, ठीक है, अच्छा होता है, डिसेंट होता है. एक ट्राइपॉड आता है 300 400 500 रुपये का. एक माइक आता है, देखो ये तो फिर भी चलो मैंने पॉडकास्टिंग के लिए लिया था, बट माई फर्स्ट माइक वॉज आइदर माई ईयरफोन का माइक और माई लाइक द बोया का माइक, विच इज़ 800. जो 1000 रुपये का सेटअप है वो, ठीक है. उसको लेने में अगर तुम एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग बच्चे हो, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे कंटेंट बनाने का टाइम लगता है, तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो अफोर्ड दैट, राइट. एंड तो सी, लाइक माई obvious philosophy is always that, has been that, never give the audience a reason to not watch your content. उनको अच्छा कंटेंट दो, उनको एक स्टैंडर्ड कंटेंट दो. देखो अभी भी द कंटेंट दैट यू आर वाचिंग, दैट्स इसको मुझे like I could have easily just used my laptop का कैमरा, webcam and recorded it on that. A podcast ये क्या फ़र्क पड़ता है, but I try and put some effort into my video quality. I've put up lighting, like well, obviously इस room में thankfully I had a lot of light, but I still put up a focus light there. Focus light का रिंग लाइट है जो कि ऊपर लगी है. अब उसको भी थोड़ा मैंने उसको जुगाड़ करके लगाया है. shout out to सिद्धांत लूथरा for that. But या मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया है मैंने. I've tried and put stuff here too. देखो यहाँ पे मैंने I've put all my books. वो सारी नहीं है, कुछ बुक्स वहाँ भी हैं, मैंने सारी नहीं पढ़ी, बट रिसेंटली आई हैव बीन रीडिंग साइकोलॉजी ऑफ मनी. तुमने अगर मेरी रिसेंट रील नहीं देखी है तो जाके देखो. इट्स अबाउट हाउ दिस इज़ अ वेरी गुड बुक. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सी द थिंग विद दैट इज़ दैट, देखो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं. इसके फ़ायदे लाइक 2-3 फोल्ड हैं. एक तो तुम जब अपने आप को थोड़ा एक स्टैंडर्ड पे होल्ड करते हो ना, तो पीपल वॉचिंग यू नो दैट यू आर सीरियस एंड यू ऑल्सो नो दैट यू आर सीरियस. अगर मैं यहाँ बैठ के एक प्रॉपर सेटअप कोशिश करके लगा के एंड देन आई एम टॉकिंग टू यू ना, तो आई एम मोर सीरियस अबाउट माई कॉन्टेंट रादर दैन कि बस मैं आया, मैंने कुछ भी पता नहीं, मैंने ढंग से कैमरा भी नहीं लगाया, जस्ट लाइक स्टार्टेड टॉकिंग. दैट इज़ मी नॉट बीइंग सीरियस विथ माई कॉन्टेंट. एंड आई थिंक अगर तुम थोड़ा सा अपने आप को लाइक सी, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कम होगा बट इमोशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा. अगर तुम थोड़ा सा मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा ऑलरेडी आ जाएगा, और इमोशनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो फिर तुम और सीरियसली कंटेंट बनाओगे. दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड. ठीक है, एक तो ये होगा, तुम और अच्छे से कंटेंट बनाओगे. सेकंड, पीपल लाइक अदर पीपल वुड नो दैट यू आर सीरियस. लाइक पीपल हु वॉच मी, दे नो दैट there's some effort put into editing, there's some effort put into the production. जब मैं पहले वीडियो एसेस बनाता था, लाइक 1 साल हो गया उस बात को, उसमें भी there used to be a commitment and people realize कि no, this person is up to some shit. like ये कोई फालतूगिरी करने नहीं आया यहाँ पे. It's not just कि उसने एक दिन उठा वो वीडियो बनाते हैं तब बना दिया. No, this is some serious stuff going on right here. ठीक है, तो दैट इज़ इट. सेकेंड, तुम इतनी सारी चीज़ें सीख जाते हो जस्ट बाय डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. तुम्हें किसी और के लिए करने की भी ज़रूरत नहीं है. लाइक जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ रनिंग अ पॉडकास्ट, आई नाउ नो हाउ टू एडिट वीडियोज़ इन अ प्रॉपर मैनर. मतलब और अच्छे से सीख गया हूँ. आई नो हाउ टू एडिट ऑडियोज़, बिकॉज ये जो ऑडियो तुम सुन रहे हो, लाइक दिस इज़ एडिटेड, इसको और अच्छा बनाया है मैंने. उसके अलावा भी यार आई नाउ नो हाउ टू सेट अप लाइट्स सो दैट द फ्रेम कैसे सेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. और इसको तुम एक हर जगह से ध्यान दोगे तो इट्स गोना हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन. लाइक नॉट एंड ऑल्सो ब्रांड्स. सी, ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास 100 फॉलोअर्स हो तो तुम्हें लाइक, ठीक है, ब्रांड्स का भी ना कई तरीके होते हैं अप्रोच करने के. द ब्रांड्स ऑलवेज डोंट अप्रोच यू विद अ स्पॉन्सर इंटीग्रेशन अनलेस तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हो. ठीक है, देयर आर ऑल्सो ब्रांड हु आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर जस्ट good at what they do so that they can use them on their platform.
ठीक है, और फिर they can use them to for something other than their followers, right? And when they see that, okay, this and you know, like if you're working with brands, they need a specific kind of there are some specific kind of requirements, like तुम अपने गंदी छत पे बैठ के उनकी वीडियोस नहीं बना सकते. You have to be at a certain level, and you know that's what being a content creator who takes these things seriously does. Like इसको तुम seriously लो, तो you can see it's all about being standing out of the crowd. There are literally thousands, hundred, like millions of creators out there. हर कोई इंसान एक creator है, ठीक है. What you need to stand out with is not just the content but also the quality, like the production. थोड़ा तो ध्यान देना है ही उस पर. एंड आई एम नॉट सेइंग कि अपने घर बेच के उसको इन्वेस्ट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द बेस्ट ऑफ वॉट यू हैव. जो तुम ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, दिस इज अ रिकॉर्डिंग डन बाय फोन. दिस इज अ फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग, and I'm pretty sure that like you will find nothing that's wrong with it, because I've spent my time like learning how to make it better. ठीक है, तो make the best out of what you have. Second, अगर थोड़ा कर सकते हो, like minor इन्वेस्टमेंट्स करते रहो. थोड़े बहुत होंगे यार, मतलब टू बी भाई 1,000 रुपये कुछ नहीं है भाई, अगर यू आर स्टार्टिंग आउट समथिंग न्यू. ठीक है, विथ जिसका पोटेंशियल है कि ये तुम्हें लाखों करोड़ों कुछ भी कमा के दे सकते हो, तो थोड़ा तुम पैसा लगा सकते हो उस पर. एंड अगेन मेक्स यू मोर कमिटेड. इट मेक्स यू स्टैंड आउट. तुम जब अपनी वीडियोज़ ना, आई रिमेंबर जब मैं वीडियोज़ बनाता था, लाइक यूट्यूब वीडियोज़, एक्सप्लेनर काइंड ऑफ वीडियोज़, तो there have been creators who've watched them. Like there have been creators जिन पे मैंने वीडियो बनाई और उन्होंने वो वीडियो देखी है, and they've appreciated it. Not just because of the content, but because of the effort I put in there. Like not just in the script, but also in the editing, in the production, everything. They are like game recognizes game. उन्होंने देखा कि हाँ, this like this बंदा does read between the lines. I think मेरा और वेदांत का जो पॉडकास्ट है, वी स्पोकन अबाउट दिस एट लेंथ, वेयर वी डिस्कस दैट देयर आर स्मॉल थिंग्स दैट पीपल शुड डू. यार कि तुम अपना जब एक वीडियो बना रहे हो, तो यू नो ट्राई एंड राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट. यू नो ट्राई एंड पुट टाइम स्टैम्प्स इन देयर इफ पॉसिबल. अगर तुम अगर तुम कर रहे हो, खुद बना रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो, तो ट्राई एंड एडिट दैट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. उससे तुम एडिटिंग सीखोगे, विच इज़ गोना अगेन ओपन मोर डोर्स फॉर लर्निंग एंड अर्निंग फॉर यू. थंबनेल अच्छा बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स कैची, बिकॉज टैग्स अच्छे डालो. सी ऑल ऑफ देम आर लर्निंग. मतलब आई स्टार्टेड एडिंग टैग्स टू माई यूट्यूब वीडियोज़ जस्ट सो दैट थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएँ. नाउ आई गेट पेड टू डू दैट फॉर समवन. आई स्टार्टेड आउट होस्टिंग पॉडकास्ट एंड यू नो टॉकिंग टू पीपल जस्ट फॉर फन, एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट्स अंडर रैप. अगर वो चल गया तो अगेन अनाउंसमेंट आएगी. एंड I just wrote stuff on the internet for fun, but you know, again, I always try to maintain quality. मुझे लगता था कि मैं जिसको दिखा रहा हूँ वो चीज़ उसको भी ये देखने लायक लगे. क्यों वो किसी और की वीडियोस ना देख ले जिसमें बेहतर मैंने प्रोडक्शन बोला, बट वो क्यों किसी और की वीडियोस ना देख ले जिसमें बेहतर प्रोडक्शन होगी और बेहतर एडिटिंग होगी. वो नहीं देखेगा भाई तुम्हारी वीडियो अगर वो तुम्हारी क्योंकि अगर तुम्हारा कंटेंट अगर इतना ही फाड़ कंटेंट है, बट इवेंचुअली तुम यू नो टू रीच आउट टू मोर पीपल यू नीड टू यू नो मेक इट मोर स्ट्रीमलाइंड और मेक इट मोर बेटर. जो वो हर कोई कर रहा है भाई. जो 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे है वो भी यही कर रहा है कि मैं कंटेंट का तरीका कैसे बेटर करूँ. तुम किसी को भी देख लो भाई, हर कोई मतलब भाई बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े भैया 2 मिलियन 10 मिलियन 5 मिलियन पहुंच गए, लेकिन फ्रेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने कैमरे को बेहतर करते रहते हैं, अपने माइक को बेहतर करते रहते हैं अपने, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू गिव देयर ऑडियंस देयर बेस्ट. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू. मतलब इट डजेंट मैटर तुम्हारे पास 15,000 का फ़ोन है, तो तुम्हारे पास 10,000 का फ़ोन है. इट मैटर्स हाउ वेल यू मेक ऑफ दैट शिट, एंड यू नो थोड़ा बेयर इन्वेस्टमेंट उसके आगे करके डू लाइक अगर तुम एक 15,000 के फ़ोन और 1,000 रुपये के माइक से लेके एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर तुम्हारा फ़ोन दूर रखा है तो उसकी ऑडियो अच्छी नहीं होगी, एंड हमेशा ईयरफोन्स की भी उतनी अच्छी नहीं होती. तुमने 1,000 रुपये का एक माइक में इन्वेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया रिटर्न, मतलब उसके लाइक ऑडियो ऐसे चली जाएगी. ठीक है, दैट्स व्हाट द इफेक्ट ऑफ दैट इज़. तो तुम्हारे पास ब्रांड्स आएंगे ब्रो, यू नो द ब्रांड्स विल नो दैट यू आर सीरियस अबाउट योर कंटेंट. So they will also know that there's like
this commitment going on here. This is not just some guy or girl who's creating content but not really a creator. I can call myself a creator because I focus on these things. I focus on how my product is presented. See, like in the end, I have saw it on Twitter or something like that. Like all YouTube channels are gonna be startups. Like if they are not gonna run startups, but they're gonna be startups in themselves because they are again positioning to you a digital product. अब वो उसको और कितने अच्छे से प्रोडक्ट को पोजिशन किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज वॉट यू मेक आउट ऑफ इट मैन. दैट इज how you think about it. This is my product. Like, how do I position it better? This is my content. How do I palette in the best way so that people get to watch it, people get to hear it, people get to see it and not feel any friction. नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि उनको तुम्हारी वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है. That's not how it should be. आई थिंक आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन्ड इट अच्छे से. कुछ और डाउट्स इसके तुम्हें कहीं लगा मैंने कुछ मिस कर दिया या तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन रह गया, प्लीज़ आस्क मी. माई DMs आर ऑलवेज ओपन. आई मीन आई एम लुकिंग टू रिप्लाई टू यू गाइज. Yeah man, I think I got feedback from someone that I should keep these kind of videos short, and we've been speaking for around 20 minutes. Well, tell me what you think about this episode, the shorter ones. Like, do you want these kind of episodes more? Like if you want this, then I can do this more often, like more like maybe more than once a week. Like एक interview episode रखेंगे, interview का एक podcast episode रखेंगे, and we also touch upon these micro topics and get to you guys about like what do I think. तो हर हफ्ते एक solo episode भी आता ही रहेगा. And yeah, tell me what you think about this episode in the comments. Tell me what you think about this episode in the DM. Share this episode, stories में लगाओ और बोलो Sit with Sid is the best podcast. सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा. नहीं, कपिल शर्मा शो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो देखो, बट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए. और तुम नहीं, क्या सलमान खान क्या बोलता है बिग बॉस में, do whatever the hell you want man, but listen to your mom or dad. जो भी कहता है वो मत सुनो. नहीं सुन लेना, बट मेरी सुन लो. लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो इंस्टाग्राम पे जाके @SidsBrainwork. लाइक डिसलाइक कमेंट जो भी चाहो तुम कर दो. शेयर करते ही रहना तुम. हम तुमसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे. तुम हमसे प्यार करते रहोगे और हम तुम्हें अगले एपिसोड में मिलेंगे जी. गुड बाय.